ਦੋ ਫੇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸਕੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ 150 ਤੋਂ 200 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੈਕਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਦੋ ਫੇਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। Police team, they have raided these premises and they have rounded up around 155 employees जो they were working in both the places, fake call centers. So these people include, some of them are dialers जो call कर दे, then some of them are bankers who अपने आप ਨੂੰ impersonate कर दे are bankers. Then they are also called, some are closers and some are floor managers. So total there were 155 employees, and out of them we've arrested all of them, and 18 were taken on police remand for further investigation. दूसरे सारा नो judicial remand में they have been sent to the jail. So we had recovered around 79 desktops. It is a very sophisticated fake call center जो चल रहे, they were very good. 79 डेस्कटॉप से 204 लैपटॉप्स and so many mobile phones and lot of other accessories recover हुई। So इनके जो modus operandi है, there are 3 to 4। एक ना ये the caller they get database from broker तो ना सारा information on the US citizens का ना they have the data and they have softwares through which they analyze and target the group whom they want to scam। सो एक फर्स्ट फ्रॉड है अमेजन फ्रॉड। अमेजन फ्रॉड में ना ये लोग अपने आप को अमेजन रिप्रेजेंटेटिव कह के दे कॉल दी पर्सन इन दी यूएस और दे थ्रेटन देम दैट कि इनकी जो भी प्री ऑर्डर हुई है दैट इज एन इलीगल आइटम। दिस इज सिमिलर टू आर दी फेडेक्स स्कैम चल रही सी का पीछे, similar to that scam that this is an illegal item and they are going to inform the federal police। So in case वो जो pre-ordered item को cancel करना चाहते हैं तो a certain amount has to be paid। So generally वो $200-300 लेके वो time period देके they threaten them and get the pre-ordered item cancelled। Okay, for confirming that in the pre-ordered item है, so they have a banker, another person in the fake call center who अपने आप ਨੂੰ banker कह के वो call transfer हो जाती है। So he becomes a banker। So they already have the information within database। तो वो banker also confirms that कि हाँ from your account this is a pre-ordered item which is illegal। On that basis, then the whoever that individual is like compelled to cancel the for cancellation they have to pay a certain amount, $200-300, and that amount is taken either in a cash app or as Amazon gift card। So they purchase an Amazon gift card and immediately the Amazon gift card, there's a number which is informed to the kingpin, they redeem the amount immediately। The second fraud that they do is payday fraud। So payday fraud which they target that particular group who have low credit score। So उन्होंने normally bank के through loan मिलना नहीं है। So they contact that particular group because they have a software which determines and gives them that group। So they contact them and they tell and lure them saying that they will be given a low interest loan। So low interest loan despite their poor credit rating। So then इनके लिए इस लोन वास्ते कुछ चार्जेस लगना है। So out of they lure them into this thing, into a trap, and then make them purchase again Amazon gift cards। So once again the same thing, the Amazon gift card is immediately the number is shared with the kingpin and who redeem the amount। इनकी थर्ड है Microsoft fraud। So Microsoft fraud में what happened on their systems when there's a pop-up that comes up which says that कि आप थोड़ा your system is compromised। That means that we are able to view the screen। So immediately contact there's a number there, immediately contact this number। So when they contact the number, they pretend to be Microsoft Custom Care।
सो कस्टमर केयर तो उन्होंने कहना कि दैट आपकी ये हो गया, सो आप विल सेंड यू अ लिंक, सो विद दैट लिंक you can with that link you can run it in your computer to protect it from being compromised. So once the link is immediately downloaded, so the complete system gets compromised. Now they had installed their app, so it looks into the system and collects the details of their bank accounts and all, and immediately whoever is the caller, the fake call center caller, is able to view into their system. So then the bank details and all are got, and from the bank details the money is immediately wire transferred to mule accounts in the US itself. So that means ki the call centers here have some partners in the US. So from mule accounts the money is immediately withdrawn through ATMs. So the person who is withdrawing वो अब कुछ commission रख के दूसरा पैसा इतने kingpins नो through हवाला they send the money. So these are 3 or 4 modus operandi of these call centers. So ये call centers ना the F88 call center जो चल रही सीगा, the fake call center, there are around 72 employees और 2 साल से इतना चल रही है. And the other call center जो ये नवी बनी है, this is in A1 Towers. Here there are 83 employees. This was started in February 2024. Actually, when we developed this information, Sanu information सिगा कि that lot of call centers which were fake call centers जो बाहर they were in Delhi and other places, they have shifted to Mohali, Jirakpur and Karad area. So we had information, and it was lot of efforts by our team, our cybercrime team. Then we were able to zero in on the locations and identify. It was very difficult even to identify. And these call centers usually run during the night time. This is from. मैम इसमें जो लोग काम करते थे वो एजुकेटेड थे या फिर किस तरीके से करते थे पूरा काम? They are all educated. They are all educated from the 155. Most of them seem to be from Gujarat. They are Gujaratis, and of course and northeast से लोग हैं. So basically they are given a script. We found in our recoveries, we also found scripts. The scripts ना to train them कि how to talk to the customer in the US. Overall कितने money है हवाला, overall कितने का amount है इस तरह से? See, this is part of the investigation. ऐसी ना Ultimately मैम 400 crore. नहीं that I can't give this one because 2 साल तो चल रहे. We had a huge recovery. It will take us some time to get to know. करने वाले लोकल ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ. मास्टरमाइंड ਹੁਣ वाले जो इंट्रोगेशन तो पता लगे गुजरात तो हैं. So गुजरात वाले बंदे मोहाली आके अपना they are the managers of the whole thing. Who are further kingpins, we have to go into it, but these are the managers are Gujarati. Most of the call takers जो थे employees हैगा, they are all Gujaratis. एक साल ऑलमोस्ट ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. इथों 2 साल तो चल रही सीगा, एक जगह 2 साल तो चल रही सी. दूजा जो A1 Towers रीसेंट है, फरवरी तो शुरू हुई. इन्वेस्टिगेशन में कुछ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ? दिस इज ऑल हुन इन्वेस्टिगेशन वो तो ये इट्स अ प्रोसेस, इट जस्ट बिगैन. इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टिगेशन में कुछ आया कि कितने लोग इनकी ठगी का शिकार बने, क्योंकि आपने 3-4 मोडस ऑपरेंडी जो कि आजकल बहुत आप लोग लगातार अवेयर भी करते हैं, चाहे वो कॉपी टेस्ट So करके see, लिंक भेज कर. with preliminary investigations, जो our inspectors were, we were like so tied up. 155 arrest, 155 arrest. The procedure is it's a huge, बहुत सारा procedures करना है. But from preliminary investigation, what we got to know that the server makes 1.5 calls. जितने ना कंप्यूटर से एक कॉल सेंटर से ना 1.5 one day. उधे which one call is repeatedly done, somebody picks up. जैसे सोनू भी बहुत कॉल्स आंदी है. यानी ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਤੋਂ? सर्वर्स की कॉल्स 1.5 हाँ 1.5 lakh. I mean 1.5 lakh people were targeted in one night. One night, right? बेसिकली एक ਉਹ सर्वर ਵੀ है, ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. हाँ. सर्वर है ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਲਸ.
ਸੋ ਉਹ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। मैम So it is a मास्टरमाइंड process. पड़ेगा ही नहीं क्योंकि नहीं, एक नहीं, बहुत बड़ा नेक्सस है। yeah, mastermind was not present and at that moment वो 3-4 दिन पहले ही निकल गया कहते गुजरात। So the day we हमारी रेट सीगा 1459, that day he was not there, but the employees जिन्ना सीगा सारा नु राउंड अप किया। From interrogation we got to know this। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ No, different। ਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੈਡਮ ਉਹਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ We Ona, it will be through the it's just preliminary। नहीं, we have no idea। We have investigations are in progress। मैम ये जो दो कॉल सेंटर्स हैं इनका आपस में कोई लिंक है? और क्योंकि दोनों की मोडस ऑपरेंडी सेम थी, जैसे आपने बताया, एक अमेज़न गिफ्ट हो गया, एक कॉपी डेस्क हो गया, एक बैंकर्स बन के एक द माइक्रोस्कोप फ्रॉड वाज द A1 टावर्स ना, A1 टावर्स ਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਜੋ ਮੈਡਮ ਬੜੀ ਹਾਈ ਟੈਕ ਫਰਜੀ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ aware नहीं ਕਰਾਂਗੇ। जरूर दूजा और एक नहीं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी करेंगे व्हेन वी गेट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। दिस इज एन इनिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट टू से दैट कि ये 15 ਨੂੰ अर्ली आवर्स ਚ ਹੋਈ ਸੀਗਾ, ਦਮ ਪੂਰਾ 15 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ, all the arrest and everything। ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੈਡਮ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ। No, these people target only US citizens। These fake call centers are target only US citizens, not from India। Data is provided, they have brokers who provide data। See, like I have told you, mule accounts in which money gets transferred, mule accounts US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। So mule accounts ਤੋਂ immediately through ATM the money is withdrawn। That means there is ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ there is Ma'am, ਜਿਹੜੇ 155 partner। ਲੋਕਲ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੀ US US ਸਾਰੇ US। ਜਿਹੜੇ 155 ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ हैं ਇਹ ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇੱਥੇ? They're not local, they're all Gujarati employees mostly, and northeast also, some were Gujarat, some from northeast। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ADGP ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। 2 ਫੇਕ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ US ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਤ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਾਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 155 EMPLOYEES ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ 18 ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 79 ਡੈਸਕਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 204 यानी कि 204 लैपटॉप भी बरामद किए गए ने। तमाम मोबाइल्स भी बरामद किए गए ने। होर भी कई गैजेट्स पुलिस के वालों काबू किए गए ने। तमाम मुद्दे ते इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। मॉडस ऑपरेंडी का भी जिक्र करते हुए ADGP स्टेट साइबर क्राइम भी नीरजा नजर आए कि किस तरीके दे नाल इन्हां नूं जो US सिटीजनस नूं इन्हां दे वल्लों टारगेट कीता जांदा सीगा ते उन्हां तो तमाम ठगी कीती जा रही सी। पुलिस दे वल्लों रेड कीती गई ते हुण 155 EMPLOYEES नूं राउंड अप कीता गया।